Hello, welcome. We are going to end this book very, very soon. It's a beautiful book and it has given Right. so much of value in last 1 month. Can't even Yes. express. Ravindraji, do you want to say anything? Yeah, this book actually I read once, and this is the revision session for me. So wonderful, and I wanted to read again and again. हम्म So it takes इसमें hardly ब्रह्मांड के सारे रहस्य छुपे हुए हैं. yeah, it takes hardly 10 minutes to revise each chapter. Yes, Yeah, yes, so that's not big deal. yes. So this is the book which I really love a lot. ये बुक बहुत प्यारी है पर इसका सारा मैजिक प्रैक्टिस में है. Exactly. सारा का सारा जब तक प्रैक्टिस करोगे मैजिक मिलेगा, प्रैक्टिस छूटते ही सब गायब. Exactly. Yes, Anishka, welcome. Hi, Richa. Hi. Do you want to share anything? We are about Um, to end this book soon, like in a day or two. oh yeah. Actually, last 3-4 days I've not been able to attend and read and all. Yeah, but So you're I think feeling lost? no, I'm not because somewhere that I'm still one thing that I'm continuing to do is ask myself before doing anything that is this the right thing? Is this how you're supposed to think? Questioning myself has become Perfect. a habit. Very good. Loved it. So Loved it. then I don't feel that lost. Perfect. Anything you want to share about the book or say something before we start day 27, The Magic Mirror? No, nothing from mine. I still have 3 chapters. I have to start what you said. Na, it's all magic is all about the implementation. तो मेरा 3 दिन का implementation pending है. ठीक है, perfect है, perfect है. Ankit, Hi, Richa. hi. Hello, everyone. Yes, not much sharing. Was a hectic and hassle-full day. अच्छा. Tried to find gratitude in that, but going away exhausted. Hmm. Can't hear you, Richa. You are mute, I think. Yes, I muted myself Yes, intentionally. yes. Oh, okay. For me, I think gratitude has always जब भी मैंने gratitude किया ना book, ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने gratitude किया हो और मैंने 4 a.m. नहीं शुरू किया हो. Every time I did gratitude book, even in the past, I always started getting up early. Because if you are mentally positive and happy and joyous and peaceful and in gratitude, आपके दिमाग को थकान कम होती है. थकान कम होती है तो आप बस चीजें ज्यादा कर पाते हो, एफिशिएंटली कर पाते हो, चीजें जस्ट फ्लो होती जाती है, सब कुछ ईज एंड ग्रेस में. अभी मैंने नई प्रैक्टिस शुरू की है बिकॉज ऑफ मैजिक इज, मैं पूरे दिन हर 1 घंटे से म्यूजिक सुन रही हूँ और काम करते हुए भी सुन रही हूँ और बीच बीच में 5-5 10-10 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ और खूब ऐसे नथिंग जस्ट डांस कर रही हूँ. 1 घंटा काम किया, फिर उठ के अलग से जाकर डांस किया, फिर काम किया, फिर डांस किया 10 मिनट, फिर काम किया, फिर डांस किया 10 मिनट. पर पहले क्या होता था, खाली होती थी तो एंजाइटी होती थी, अरे मैं क्या करूं, मैंने सब सही तो किया है ना, कुछ मिस तो नहीं हो रहा. फोमो बहुत ज्यादा था मुझे, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती थी. पर अब जब से मैजिक बुक कर रही हूँ, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर द म्यूजिक एंटर एंड नाउ आई एम एंजॉयिंग म्यूजिक बिकॉज आई थिंक इट्स अ मूड शिफ्टर फॉर मी. सो मेरे को पता, मुझे मेरी वाइब्रेशंस बना के रखनी है. जैसे ही मैं थोड़ा सा डिप फील करती हूँ, बोर्ड फील करती हूँ, एंशियस फील करती हूँ, मैं म्यूजिक ऑन कर लेती हूँ, चैंटिंग शुरू कर देती हूँ, भजन शुरू कर देती हूँ, कुछ भी शुरू कर देती हूँ ईयरपॉड्स के साथ. एंड आई एम लाइक डूड, आई एम enjoying it and I'm dancing a lot and I am listening to music. So yeah, so that's how I'm maintaining my energy, my form of gratitude. Yeah, Richa, I Great way. think this helps a lot. This helps dancing and enjoying at workplace whenever there is a active. You can say it is active rest. yes yes so And आप in बहुत कंसंट्रेटेड काम करो, फिर ब्रेक लो 10-15 मिनट का और खूब
मतलब जंप Yes. करो या एनर्जी इंक्रीज करो, फिर कंसंट्रेटेड काम करो, फिर ब्रेक लो. इससे इससे Yeah. इंटर इंटर जैसे अपन जिम में भी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, तो वो हाई इंटेंसिव वर्कआउट हमेशा इंटरवल्स में होता है. Yes. So with the brain also, if you want to do very concentrated job, very efficient job, very productive job, you should work with concentration and then take a break Yeah. Yeah. and then work. So I am listening to my emotions a lot. I'm asking myself how I'm feeling, how I'm feeling. जैसे मुझे लगता है dip हो रही है तो I don't work. जैसे I feel I'm in high energy, the emotions flows, the ideas flows, the work flows, and I just do it. So I'm just flowing, flowing, flowing. I'm not working hard. I'm just flowing, and things are flowing, and the work is flowing. मैंने last 2 दिन में इतना काम किया है, इतना काम किया जो मैंने महीने भर में काम नहीं किया होगा. That kind of productivity I had in last 2 days. और मैंने manifest किया था life coach बनने का. मैंने पूरे deliverables बना दिए, chapter names बना दिए, pitch बना दी. I don't know where it is flowing from. It's just coming to me. Have designed the outline of the whole course in last 2 days while working on my business. And it's just 4 a.m. magic, the gratitude magic, maybe your blessings that my dream is coming true. So thank you so much for doing this book with me. It means so much, and so much I can't tell you. Thank you. And my invitation is that you revisit your dream list. You will see, if you revisit your dream list, कि आप महीना पूरा होता आ रहा है, आपकी dream list में से चीजें कटनी शुरू हो जाएंगी अब. Be connected to the dream list and your purpose of life, and what is it that you truly desire and want. Yes, Ankit, you were raising hands. Same thing happened with me, drain wali energy. Like at 6, I was working efficiency was below 10%. I thought कि नहीं यार, I'm leaving it. I'm in Mumbai right now. Came to the cafe. मैंने सोचा magic session attend करता हूँ, थोड़ी energy आएगी and will feel little better. So काम को usually when I come out, I work till 10:30. But 6 o'clock I realized कि मतलब सिर्फ शरीर चल रहा है, दिमाग तो zero हो चुका है. हाँ. So then I thought कि नहीं यार, better है. I'll attend the session today. Yesterday I wasn't able to attend it. So then I thought कि नहीं, I need it. 6 p.m. I left the work. Now I am attending. Sitting at And cafe. you're doing 8 a.m. It's very necessary कि 6 o'clock, 7 o'clock तक आप mentally बिल्कुल free हो जाओ. अगर आपको सुबह 4 a.m. करना है तो. It's not necessary कि आप है ना खुद को रात तक घिसते रहो 8-9 बजे तक, फिर सो एग्जॉस्ट होके फिर 4 बजे वापस काम पे लग जाओ. That's not how things work, and that's not how you will get productivity. If you want high productivity, you need refreshing moments in life and refreshing time for your own self. आपको तो प्रोडक्टिविटी से मतलब, आपको तो रिजल्ट से मतलब है ना. आपको अगर हाई रिजल्ट्स चाहिए तो मेक श्योर यू आर रेस्टिंग वेल, हैविंग फन, हैविंग अ गुड टाइम, इन अ पॉजिटिव मूड, द एनर्जीज आर हाई. सो आपका तो सिर्फ काम ही हाई एनर्जी मेंटेन करने का होना चाहिए. काम रिजल्ट्स अपना फ्लो करेंगे अपने आप. मैंने अपनी सारी एनर्जी खुद को खुश करने में लगा रखी है. I don't care how the work is happening, what is happening. And trust me, last 2 दिन की productivity skyrocket. I can't even tell you. Because my whole focus is Richa needs to be happy. Richa needs to be happy. Richa needs to be happy. Work is flowing, health is flowing, everything is just flowing with ease and grace. So you don't need to exert and do a lot of hard work to get the results. Understand that concept. It's just in your belief system कि मैं 10 बजे तक बैठा रहूंगा तो sales आएगी. Are you getting me? So cut it short, make your work very efficient, to the point. मतलब आपको ऐसे टच करना चाहिए और आपका काम हो जाना चाहिए. You don't need to type everything. आपके एक टच करने से काम हो जाना चाहिए, आपके एक सिग्नेचर से सारा काम हो जाना चाहिए. That's the science. So आपके एक टच में है ना, कोई भी चीज सोने में बदल जानी चाहिए, वो वाली चीज आप समझ रहे हो. So it's not about the how much
physical energy you're putting. It's about how much energy, spiritual energy you're putting. So focus on developing that. Yes, Anushka. Yeah, so in sharing, there are, I think, two things. One that I've got out of this book is Brahmasmi. That means I am the universe. So, like what you were saying, right? What does Anushka want? Hmm. For anything, if I wake up in the morning, what do I want to see? Hmm. So, if I want to see the river, then I want to live by the river. For Hmm. example, I want to see an open sky. I want a house on a top floor. Hmm. So everything, what does Anushka want? And I am the universe. If something wrong has happened, I have created it. Something good has happened, I have created it. So that is one thing definitely that I've taken away till now from the book. And the second thing is magical outcomes. I am using magical outcomes for everything, even if it is a call, even let's say before this call, if I have 1 minute also, I will prepare what do I want out of this. Just in that 1 minute, one thing Hmm. that I want. If it's a very important meeting, like I had shared earlier also, if there's Hmm. a price negotiation with my supplier or something like that, then I'll spend 15 minutes on my magical outcome. I will write it down. And Hmm. it is actually going like that. अगर आरजे सर के साथ कॉल है तो कभी कभी on the call with him you get very कि क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना. For that also, what is the magical outcome that I want sir to give me? Exactly. How do I want him to feel? Same way, Yeah. if I'm coming on this call, Yeah, what that's the magical power outcome I of want to. intention setting. That's the Yes, yes. power of So I think intention these are my setting that two we big learn. takeaways from the book, and it has Very, changed very good. every. That's why I'm saying ki it's not about how much physical force, hours, time you're putting in. It's about consciously आप कितना काम कर रहे हो. तो कॉन्शियसली काम करने के लिए ना आपको बार बार एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी. और वो कैसे होगी? खुद को गुड फीलिंग्स में रखने के लिए. अच्छा, खुद को गुड फीलिंग्स में कैसे रखोगे? यू फाइंड व्हाट इज योर मूड शिफ्टर. अगर थोड़ा सा आप डिप कर रहे हो एनर्जी में, तो आपको म्यूजिक पसंद है म्यूजिक करो, रीडिंग पसंद है रीडिंग करो, वॉक पसंद है वॉक करो, ब्लेसिंग्स लिखना पसंद है तो ब्लेसिंग्स लिखना शुरू कर दो. एनीथिंग. डांस करना पसंद है डांस करना शुरू कर दो. फाइंड योर मूड शिफ्टर्स. चॉकलेट खाना पसंद है, मूड डिप हो रहा है, थोड़ी सी चॉकलेट खा ली. बट आई थिंक चूज अ हेल्दी मूड शिफ्टर इंस्टेड ऑफ चॉकलेट. कितनी चॉकलेट खाओगे? दिमाग तो कितना डिप कर सकता है ना. तो मेरे लिए म्यूजिक इज वर्किंग वेरी वेल. सो आई हैव एंड अफर्मेशन. सो आई एम अफर्मिंग. मैंने हर जगह लगा दिया, आई एम माई प्रायोरिटी, आई एम माई टॉप प्रायोरिटी, आई एम माई टॉप प्रायोरिटी, आई एम माई ओनली प्रायोरिटी. दैट्स हेल्पिंग, है ना. तो एंड मैंने ये क्रिएट कर लिया सेल्फ लव. मुझे खुद को प्यार करना है, मुझे खुद को खुश रखना है, मुझे खुद को प्यार करना है, मेरा खुद को खुश रखना है. मेरी बस एक ये मेरी वन थिंग है जो इस बुक की है ना. मुझे खुश रखना है, मुझे खुद को खुश रखना है, मुझे खुद को प्यार करना है. वो मेरा वन थिंग है. अब वो मैं कैसे भी करूं, इट्स नॉट अबाउट कि व्हाट रिजल्ट्स आई एम गेटिंग, इट्स अबाउट आई एम माय टॉप प्रायोरिटी. मैं खुद को कैसे खुश रख सकती हूँ, आई विल डू दैट. सो व्हेन आई एम डूइंग दैट, तो मेरा कंसंट्रेशन ऑफ वर्क हैज इम्प्रूव. मैं मॉर्निंग 4 o'clock से काम कर रही हूँ एंड इट्स 7:27. आई एम स्टिल फीलिंग सो एनर्जेटिक. मैं कल तक 4 बजे तक भी काम कर सकती, बट आई प्रेफर टू स्लीप. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये बहुत बहुत क्रिटिकल है एंड बहुत मैजिकल है. आई एम माई टॉप प्रायोरिटी. काम होता रहेगा. मेरी इंटेंशन ये है कि मैं मेरी एनर्जी हाई मेंटेन होनी चाहिए. तो क्या मैं हाई मेंटेन एनर्जी कर रही हूँ? अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना है 4 बजे उठ के, तो मैं तो अफर्मेशन शुरू कर दिए. मेरी एनर्जी हाई होती है, आइडिया आता है, अरे यार ये कर लेती हूँ, अरे इसका ये सोल्यूशन, इसका द यूनिवर्स इज जस्ट शावरिंग द सॉल्यूशंस टू ऑल माय प्रॉब्लम्स. ऐसे खट 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 काम हो रहा है. इट्स नॉट अ मेंटल एफर्ट ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग डिफरेंशिएशन? मैं सिर्फ एनर्जी मेंटली मेंटेन कर रही हूँ म्यूजिक से, डांसिंग से एंड अफर्मेशन से. आई एम माई टॉप प्रायोरिटी. जैसे ही मुझे लगता है यार आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं अफर्मेशन वीडियोज ऑन कर लेती हूँ. आज 2 दिन में मैंने इतने अफर्मेशन वीडियो सुने, इतना म्यूजिक सुना और इतना डांस किया है. मतलब कभी भी शुरू हो रही हूँ मैं. Any hour of the day, I feel energy is dipping. I listen to music, I listen to affirmations, I affirm, I do whatever is needed to shift my energy. I talk to a friend, I do whatever is needed. I just stop working and I just shift my mood. If there is a breakdown in something, I will stop working and I will first
try to raise the energy and vibration. जैसी एनर्जी और वाइब्रेशन इंक्रीज होती है मैं वापस वर्क करने लग जाती हूँ। फिर डिप होती है, कुछ समझ रही हूँ, कुछ अटक रहा है, एकदम से क्या करूँ, म्यूजिक सुनूंगी, अफर्मेशन सुनूंगी, डांस करूंगी, टॉक टू अ फ्रेंड, और जस्ट डू नथिंग, सब कुछ बंद करके है ना वॉक वॉक कर लूंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Learn to stop walking. Learn to stop running after work and solutions and problems. Just stop. खुद को स्टॉप कर दो जैसे ही आपको लग रहा है आप नीचे जाने वाले हो। That's it. ब्रेक लोगे 5 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, आप नॉन स्टॉप काम करोगे और आपको लगेगा यार अब क्या करूं अभी भी बहुत एनर्जी है, काम तो खत्म हो गया, मैं फ्री हो गई। And then ideas will flow. Yes, any sharings before we start day 27, the magic mirror? Umang and Ujjwal just joined, I guess. Ujjwal? Hi Richa, how are you? Hi Hi. everyone. I'm really sorry मैंने last 3-4 days की classes miss करी. So, but the good thing is things are slowly moving in the right direction. Yeah, I've just I think मैंने last sharing में I think a few days ago मैंने बताया था कि एक client के साथ client को मैंने 6 months पहले mail करा था, फिर वो reply नहीं आ रहा था, and then और वो आता randomly उसी दिन he replied. So today he just gave me an order. So I'm Oh, just perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Lovely news. Lovely news. Lovely news. That's the good thing. Lovely. Thank you. Yeah, but Ujjwal, ये तो आप एक specific outcome हो गया। Hmm. मैं चाह रही हूँ अभी क्लास के मैजिक मिरर ये जो बुक है ये 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो जाएगी। सो यू नो स्टार्ट फोकसिंग ऑन कि एज अ लाइफस्टाइल में आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि वो क्या हैबिट होगी ना, वो जो कोई आप हैबिट ले सकते हो, कोई एटीट्यूड चेंज ले सकते हो, वो आप इस तरह से लो कि उसको पकड़ के आगे लेके जाओ। नहीं बट वो तो हो गया ना, बिकॉज हम like I shared earlier, गुस्सा नहीं आ रहा तो बहुत मिनिमम आ आ नहीं रहा रहा बिकॉज अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी प्रैक्टिस है जो आप कंटिन्यू रखोगे इवन आफ्टर द बुक एंड्स, इज व्हाट आई एम आस्किंग, so that the magic continues, the gratitude continues, your way of being continues. Got it. I understand कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा यार। अभी नहीं चला कैसे हो गया यार वही तो। So Good. मैंने इसलिए शेयर किया कि what I have taken is मैं तो 100% म्यूजिक पे शिफ्ट हो गई। किस पे ऐसे सॉरी? म्यूजिक पे जैसे Music. मेरा मूड थोड़ा सा डिप करता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं उसी वक्त म्यूजिक ऑन कर लेती हूँ या चैंटिंग ऑन कर लेती हूँ, मेडिटेशन म्यूजिक ऑन कर लेती हूँ, डांसिंग नंबर्स शुरू कर देती हूँ, या सब कुछ छोड़ छाड़ के वॉक पे निकल जाती हूँ। और आई जस्ट स्टॉप वर्किंग इफ द एनर्जी इज डिपिंग मेंटली। Okay. एंड वो 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेते ही ऑल द सोल्यूशन कम्स टू माई माइंड, बिकॉज मैं एनर्जी मेंटेन रख रही हूँ। So you need to figure out what is it that you taking away. जैसे अनिष्का ने लिया है कि you know she's setting intention every minute कि उसको अब क्या create करना है, उसको अब क्या create करना है, उसको अब क्या create करना है। So उसने वो intention पकड़ लिया, उसके लिए वो work कर रहा है। So you figure out अभी 2 दिन में ना कि what is it that you want to take away and you will continue forever कि ये चीज अब मेरी हो गई, अभी कहीं नहीं जाने वाली। सबसे पावरफुल वन थिंग है इस बुक की, मैं ये लेके जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। उमंग, you there? Vivek, you there? Okay. Hi, Richa. Good evening. This is Prerna. Hi, Prerna. How are you? All good? Thank you. Thank you so much for taking these sessions. So आपने I think, सुना था this is my recording? third session with you. So I would like to share something. Please. Yeah, so from last, 10 years, I'm struggling to lose my weight after the baby. And also, I was going through some eating disorders. So, I don't know what happened from last 4, 5 days.
I was talking to one of my friends. She was also facing the same, and she told me to talk to a counselor. And I did it day before yesterday, and I don't know after that what happened. Things started coming to place. I started attending. Varun sent me your link. I attended your session. I felt positive, and आज अचानक से मेरे मन में आया कि आई हैव बीन ट्राइंग टू लूज वेट, तो थोड़ा थोड़ा कम हो भी रहा है, बट स्टिल आई लूज माई ट्रैक। तो अब आज मेरे मन में आया कि लेट लेट मी पोस्ट माय जर्नी टू सोशल मीडिया। तो उससे क्या होगा, लाइक आई विल बी मोटिवेटेड, पीपल विल लुक अप टू मी, आई विल लुक अप टू देम। तो आई मीन इट हैपेंड लाइक दिस। I don't know. What do you want to share on social media? No, I shared today that I want to share my journey, like from morning to evening, what is my routine, what am I eating, what workout I am doing. So I'll share with them Yeah, so that I that's am perfect. That's motivated. Yeah. perfect. I thought you are going to share some, something else. So that would have worked negatively for you. But good, if No, you're no. sharing the schedule, it's perfect. Um, I would also recommend that आप खुद को continuously प्यार दो. Right. No, And I that is, am feeling positive. A lot of, promise my mind yourself, is free. promise yourself to be kind to yourself. Promise yourself that I will not criticize you no matter what. Promise yourself that, and just in the mirror say sorry, because you must have criticized, blamed, and said very negative words to your own self and your body. So say sorry for that to your own self and do it continuously. And we are doing the magic mirror. Oh gosh, this is the perfect chapter for you. Perfect Wow. chapter. Magic mirror, because it's all about the self image. And and just tell yourself, I want to love you, I want to like you, I want to love you, I want to like you. Please allow me to love you. Your name is, sorry? Prerna. Prerna, yes. Prerna, please allow me to love you. Prerna, Yes. please allow me to like you. I haven't been kind to you. I am sorry. I am sorry. I'm sorry for neglecting you. I'm sorry for not being there for you. Or, whatever comes. It will Right. it will just come automatically. Right. Thank you. And say, please give me space to hold you now. I want to give you time. Please allow me, Prerna. I want to be there with you. Please allow me, Prerna. And you are my top priority now. You are my top priority. I promise I will talk to you every hour. So you put an alarm on your phone Mm-hmm. hourly. Alarm bajega and you will talk to your own self. Prerna, Right. how are you feeling? Prerna, how are you feeling? Prerna, how are you feeling? Prerna, how are you feeling? The eating disorders happens because of anxiety. It happens because you're not connected to your own self. And the hunger pangs and all the weight happens when you're feeling undernourished, underloved, underprotected. You're not feeling safe. And Right. I know the feeling. Because मैंने तो 3-4 किलो ही वजन गेन किया था, पर वो मेरे लिए बहुत बिग डील हो गई थी. And I was just criticizing myself for कि मेरे से तो इतना भी नहीं पा रहा. I broke a promise to my own self of being a certain way. And I was criticizing and I was blaming and I was like, shit, I can't even see you in the mirror. All of that. And it may take time, just practice. And there is Right. this book called The Mirror Work by Lucy Hay. It's a very Okay. difficult book, very, very difficult book. मैं कब से खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने पढ़ी भी है. But it may take time. If you do that, 100% transformation आएगा. Right. ठीक है? So let's start with day 27, the magic mirror, because it's a beautiful start to this chapter. Very beautiful start. And I also, Prerna, I don't know आपने सुना नहीं सुना, मैंने अपने husband का manifest किया था. He lost 30-35 kg.
So don't stick to the how, don't stick to the कि मैं ये करके है ना, मैं ये करके वजन लूज करूंगी, उस पे स्टिक मत होना। मैंने क्या किया था अपने हस्बैंड के साथ कि मेरा पति कब कैसे पतला होगा, मैं उसको हेल्दी फूड बना के खिलाऊंगी ना, तो मेरे बनाने से, तो मेरा फोकस क्या था, मेरे खाने बनाने से मेरा पति पतला होगा, कि नहीं, ये नहीं कि मेरा पति पतला हो रहा है। Are you understanding? So I removed myself from the manifestation of he being fit and healthy. So maybe your own block will be your own self. Maybe you must be blaming कि प्रेरणा तो ये खाती है इसलिए मोटी हो गई, प्रेरणा तो ये खाती है इसलिए मोटी हो गई, प्रेरणा ने ये नहीं किया इसलिए प्रेरणा मोटी हो गई. Maybe eating disorder is nothing but you blaming yourself. You don't have any eating disorder. It's just in your mental game. You tell yourself it's you who don't eat properly. You have an eating disorder. That's why you're getting fat. Are you understanding? Maybe I'm asking you to consider. It's you blaming yourself. Ki Prerna, you have a eating disorder. That's why you're getting fat. You don't have any eating disorder. What is eating disorder? There is no eating disorder. In reality, there is no eating disorder, प्रेरणा. ये आपने खुद को बोल बोल के eating disorder बीमारी उत्पन्न कर ली है. It's you blaming yourself, criticizing yourself continuously. Right. And that's how human beings function. So don't. अब इस स्टोरी में मत चल जाना कि प्रेरणा अब तेरे में इतनी अक्ल भी नहीं थी, तो खुद को क्रिटिसाइज करती रहती है, तेरे पास और कोई काम नहीं है. डोंट गो लाइक दैट. ओके, सो बी वेरी 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 कंपैशनेट टू योर ओन सेल्फ. बी वेरी वेरी लविंग. गिव योरसेल्फ स्पेस. Initially, you need to give yourself space. Maybe to cry, maybe to yell, maybe to put out all your insecurities and fear out there and speak about it in the mirror. And there might come some episodes which you were not even ready to address from the childhood or related to your pregnancy, which I may not know, Varun may not know, or anybody in the family may not know, which you only and you have experienced, and you were like, how the hell or why the hell I went through this during pregnancy. And somewhere maybe you are blaming that incident or circumstances or situation for you getting fat. So you have to go in self-inquiry. I'm just asking, if you're going in self-inquiry, be very, very gentle to yourself. And please take my number from Varun. Please be in communication with me personally. I will help you. Thank you. Thank you so much. I will love to help you. Thank you. Okay, day 27, the magic mirror. It's all about you, it's all about you, and it's all about you. The appearance of things changes according to the emotions. And thus, we see magic and beauty in them. While the magic and beauty are really in ourselves. Understand, मैंने अभी जो प्रेरणा को कहा, ये sentence same वही चीज बोल रही है. The appearance of things changes according to the emotions. And thus, we can see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves. It's a very big chapter. It's just starting of the book called Magic Mirror by Lucy Hay. ये उसका introductory chapter है. By the way, इस book में जो 28 practices हैं, वो सिर्फ introduction to a very big chapter है. मतलब हर एक chapter की book बन सकती है. इतनी deep practices है ये. But we are starting with the Magic Mirror today. So just do it the kindergarten types. You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, chasing one problem after the another, trying to fix them, complaining about situations or other people, and never succeed in living your life to the fullest and realizing all of your dreams.
But when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes, just like that. Someone please mute yourself. Who is it? Please mute yourself. But when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes, just like that. Your world magically changes because you changed, so that you are attracting change too. In the inspirational words of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song, Man in the Mirror, which impacted hundreds of millions, one of the most powerful messages of all time was delivered. Change the person in the mirror and your world will change. Abhi, change in the person in the mirror is not about our outer stuff. It's about who you are being with your own self and with the world. How do you see yourself and with the world? Sometimes we are very scared to address our own emotions. किसी पे गुस्सा आ रहा है तो अपन अच्छे बनने के लिए गुस्सा नहीं करते, खा जाते हैं. गिल्ट आ रहा है उसको एड्रेस नहीं करते, खा जाते हैं. रिजेंटमेंट है किसी चीज को लेके, खुंदक है, उसको एक्सप्रेस नहीं करते, डील नहीं करते, खा जाते हैं, तो कैंसर हो जाता है. बिकॉज वी लव बीइंग नाइस. We love being nice to people. If someone is doing something wrong, you are very scared to voice it up. आप उसको खा जाते हो और आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होता है वो. Now again you can't go in the blaming zone कि यार देख मैं तो कितनी अच्छी थी, उसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने उसको कुछ बोला नहीं पर मैंने खुद का ही नुकसान कर लिया. And especially with the ladies it happens so much because ladies are trained to be timid. They are trained not to be outspoken. They are trained to not voice themselves. मेरे घर में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है. मेरे को लोग बोलते थे कि तो बदतमीज है, मुंह पे बोलती है, एक तो बदतमीज है, इसको गुस्सा तेज आता है. She expresses herself too much. She thinks of herself too much. खुद को क्या समझती है. She's very modern maybe. She doesn't have manners or this and that and whatever. But I knew the signs. I knew if I don't fight for what's right or what I believe is my personal right, then maybe I will go in resentment, anger, hatred, guilt, self-pity, low self-esteem, which I actually went through. And I will blame other people for destroying my life, my in-laws for destroying my life, my husband for destroying my life, which is such a normal emotion to have. But I made sure I continuously expressed it in my journal, in the mirror, and in the book. But not everybody have access to this practice. Not everyone is aware of these practices. So that's why females are very and more prone, at least in India, to physical damage. Maybe it's cancer, maybe it's fat, or maybe it's something else. Because we just don't have get away to express our emotions. और शेयर करने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि सामने वाला समझ रहा है या उसका कोई सोल्यूशन दे सकता है. बिकॉज इतने सारे तो वो धक्कानुसी या ये नॉर्म्स बना रखे हैं कि हमें तो इसी तरह से जीना है. वी कांट डू व्हाट वी वांट टू डू. एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, अब होता है जब फैमिली एनरोल हो जाती है कि ठीक है अब तुम कर लो, तुम्हें जो करना है, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, जब तक हमारा कॉन्फिडेंस खुद पे से खत्म हो जाता है कि हम एक्चुअली में कुछ कर भी सकते हैं क्या, दुनिया को कुछ दे भी सकते हैं क्या. So my mom, she is exceptional. I think she has been the pillar of her house. But वो इतने सालों तक घर में रही है and उनने अपने टाइम में फाइट भी की है. She made what we 3 children are today and what my father is and what position he holds. I think वो सब मेरी मम्मी के कारण है because she has always been fighting for all 4 of us. But she was maybe उनने अपने दिमाग में इतना खुद को भर लिया या she was like वो थक गई फाइट करने के. She stopped fighting for her own self. उनने खुद के लिए खुद की इच्छाएं मार दी. उन्हें इच्छाएं रखी बच्चों के लिए, पति के लिए, पर खुद के लिए खुद की इच्छाएं मार दी. तो she also went through huge मतलब
body expansion and self guilt, low self esteem, and all of that. And it's so scientific. It's just pure science. The fat is nothing but the emotional uh, burden you're carrying with you. It's not fat, it's your emotional burden. It's just emotional burden of feeling unloved, of feeling unheard, of feeling not understood, of feeling not supported, and all of that. It's a self healing thing. I will recommend, ये आप किसी को दूसरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा. We all feel कि मेरा पति ऐसा था या मेरी फैमिली ऐसी थी. They could have supported me, they could have loved me, they could have heard me, the environment could have been better, the children could have been better. Doesn't work like that. The only thing which will work is that I am responsible for my life. I created my body the way I have created till now. And I'm sorry, Richa, please forgive me. ठीक है, मोटी हो गई, मैंने चूज किया, मैंने खुद को मोटा किया. I'm sorry. And I still love you and I want to love you. Or I want to love you, and because I love you, I will want you to be in a good shape. I just want you to be in the good shape. But ठीक है, मुश्किल है, पर the promise is that I will love you no matter what. And the journey will start from there. It's not easy, but that's the start. If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed. And even though it is sometimes hard to see the changes in yourself, you will have felt the change in your happiness. And you will have seen the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. You have practiced the magical power of gratitude for your family and friends, for your work, money, and health, for your dreams, and even for the people you come across each day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. When you're grateful to the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I am not good enough completely disappear. And with them, very dissatisfying, discontent, and disappointing circumstances in your life magically disappears too. Negative feeling about yourself cause the greatest damage to your life because they are more powerful than any feeling you have about anything or anyone else. सो यू नो अब जब आप दूसरों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हो, वहां पे भी आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट? बट जब आप खुद के साथ बात करोगे ना मिरर में और बोलोगे यार हम तो 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, फॉर माई बॉडी, फॉर व्हाट आई लुक, फॉर हाउ लाइफ माई हैज बीन, तो बड़ा धक्का लगता है. खुद को माफ करना, खुद को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा 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 मुश्किल है. और खुद की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, खुद की फीलिंग्स को फील करना इज वेरी वेरी ओवरवेलमिंग. एंड the magic door will open there and there only when you will allow yourself to feel everything and anything. गंदी से गंदी फीलिंग, गंदा सा गंदा थॉट आने दो, फील करो, एक्सेप्ट करो, say sorry, give yourself space to be. Emotionally give yourself space to be. Physically you will shrink. Wherever you go and whatever you do, you take those negative feelings with you in every moment, and those feelings taint everything you touch, and they act as a magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment, and disappointment with everything you do. So when I realized कि मेरे को फैमिली में सब criticize कर रहे हैं, मैं इतना काम करती हूँ, I'm so good, I'm so educated, there is, मतलब अगर रिज्यूमे देखो या बायोडेटा देखो, यू नो, लॉजिकली, तो मुझे लगता था यार लॉजिकली तो मेरे में कोई डिफेक्ट ही नहीं है. भगवान जाने मेरे साथ इतने बुरे सर्कमस्टेंसेस क्यों हो रहे, राइट? मतलब सब कुछ तो है भगवान, फिर क्यों इतना गंदे फेज ऑफ लाइफ से जा रही हूँ. दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि लाइफ में सब कुछ है, सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, सेल्फ फॉरगिवनेस नहीं है. और बचपन में क्या, मम्मी हर चीज के लिए टोकती थी, तो आपके जो पेरेंट्स की आवाज होती है वो आपकी छोटी आवाज बन जाती दिमाग की. तो मेरी आदत बन गई थी कि मैं कितना ही कर लूं ना,
कितना ही काम कर लूं, आई विल ऑलवेज से मैंने तो कुछ किया ही नहीं. इवन आज आप मुझसे पूछोगे कि क्या काम किया, तो जनरली माय वे ऑफ बीइंग विल बी, यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, सब अपना आप हो रहा है, राइट. आई डोंट हैव एन हैबिट ऑफ एक्नॉलेजिंग माय ओन सेल्फ. I don't have an habit of being that I am something, like एक attitude होना चाहिए, वो नहीं है. And that's something good to have. That's something really good to have. It was not taught to me like that. I was taught to be humble. I was not taught to be self-acknowledging, self-praising, self-loving. So now I'm learning that Richa, I love you. Richa, I love you. Richa, I love you. Richa, I love you. You're my top priority. You are my only priority. That you are my only dharma. सिर्फ तुम ही हो जो मेरे काम की हो और कुछ काम का नहीं है. When you are grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about your own self. You have to be rich with good feelings about yourself to bring riches to your own life, to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. Whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will be taken away from him or her. To do the magic practice, magic mirror practice, go to the mirror right now, look directly at the person in the mirror, and out loud say the magic words, "Thank you," with all your heart. Mean it more than ever you have before. Say thank you for the being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. खुद के लिए एक तो ग्रेटिट्यूड लिस्ट मैंने बनाई थी. मैंने जब मैं खुद पे मिरर वर्क पे काम कर रही थी, तो जब मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल एनवायरनमेंट में, जहाँ पे मेरे को सब क्रिटिसाइज ही करते रहते थे, तो ये लॉ है, अगर आप खुद को दिमाग में क्रिटिसाइज कर रहे हो और या खुद को, इफ यू आर अ परफेक्शनिस्ट, यू आर टेलिंग मी आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, इस तरह से होना चाहिए, उस तरह से होना चाहिए, सो यू आर क्रिटिसाइजिंग एंड यू आर नॉट प्रेजिंग योरसेल्फ, राइट. तो अगर इफ यू बीइंग वेरी, मैं उस वक्त फैक्ट्री सेटअप कर रही थी, मैं बहुत कुछ कर रही थी लाइफ में, राइट, एंड आई वाज नॉट समथिंग समवेयर, सो आई वाज क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ अ लॉट इन माई माइंड कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. सो इफ आई वाज डूइंग दैट, even my environment was mirroring what my inner dialogues was saying to my own self. So if I was criticizing my own self, everybody in the family was like, भगवान जाने क्या करती रहती, भगवान जाने क्या करती रहती, भगवान जाने क्या करती रहती. Because I was doubting my own self, they were doubting me. And वो doubt करते थे तो मुझे चुभता था, मैं खुद doubt कर रही तो फर्क नहीं पड़ रहा, right? Continue with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of their day to day. And say the magic words, "Thank you," every time you look at yourself in the mirror. If you're not in the position to say the magic words out loud at any particular time, then you can say them in your mind. And if you're really brave, you can look in the magic mirror and say the 3 things about yourself that you're grateful for. ये जितने भी आर्टिस्ट है, बॉलीवुड आर्टिस्ट है, फिल्म स्टार्स हैं, ये स्टार्स क्यों बनते हैं? क्योंकि 24 घंटे मिरर वर्क करते हैं यार. दे ऑलवेज प्रेजिंग देमसेल्व्स इन द मिरर. वो घंटों तक मिरर में खुद की तारीफें करते रहते हैं. दैट्स व्हाई दे बिकम स्टार्स, बिकॉज दे फिल देमसेल्व्स विद द ग्रैटिट्यूड फॉर देयर ओन सेल्फ. वो खुद की इतनी सेल्फ प्रेज करते हैं कि पूरी दुनिया उनकी प्रेज करती है. दैट्स इट. इट्स अ सिंपल साइंस. इसमें और कुछ भी नहीं है मैजिक. इट्स अ साइंस. If for any reason in the future you're not being kind to yourself, you will know to give to that one person who deserves your gratitude more than anyone else, the person in the mirror. When you're grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you're grateful, you don't criticize yourself when you're not perfect. When you are grateful for being you, you are happy, and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances, which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you can see the magic in the mirror, in that person in the mirror,
your whole world will change. It's a very, very, very powerful chapter. The magic practice number 27, the magic mirror. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Each time you look at yourself in the mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before. आज भी जब मैं मिरर में देखती हूँ मैं 100 कमियां निकाल देती हूँ, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया. थोड़ा ऑफ लग रहा है. ऑफ, थोड़ा ऑफ है, never satisfied. If you are really brave while looking in the mirror, say 3 things you are grateful for about yourself. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है. अब मेरे को लगता है सबके लिए होगा ये. होमवर्क चैप्टर खत्म होते ही ना सबसे पहले मिरर के पास भागकर जाना और खुद की 3 तारीफ करना, बिकॉज बाद में तो क्या फिर गायब हो जाएगा ये. Yes, any questions? Questions, please. I can start by saying, what an excellent chapter. Excellent. I have no words to express the gratitude for this. Yes. Thank you so much, Richa. Yes. Thank you. Thank you for listening. Yes. Any questions? Any sharing? Yes, Anishka, please. So, Richa, I've done this because I also follow Louis Hay, but I think I want to share my sharings tomorrow once everyone else is done with it also. Please, Anishka, just share. Don't hold back. So first, when I did it, to even look at myself in the mirror for like 2 minutes straight, right into my eyes, I started crying. Because I realized that, somehow something told me that I only can't look at myself in the mirror for so long. So when I started to say thank you, when I started look at, I sorry. only say ye kharabi hai, ye kharabi hai, ye sahi nahi, ye sahi nahi. So I started saying sorry. And for a long time I did that. I said sorry, sorry. When I felt better, then I could start saying thank you. मैं तो जनरली ये बता रही हूँ, मैं तो वीडियो भी ऑन नहीं करती नॉर्मली क्लास में, और मैं अभी भी क्लास में ऐसे ही उठ के आ जाती हूँ. मुझे लगता है एटलीस्ट मैं बाल तो बना लेती, एटलीस्ट मैं थोड़ा सा काजल तो लगा लेती, एटलीस्ट थोड़ी तो प्रॉपर लगती मैं. इट्स ऑलवेज देयर एंड आई चूज नॉट टू इंडल्ज इन दैट टॉक. It's a choice. When the thoughts like that come, just say thank you to those thoughts. Thank you. I understand that you're caring for me, but I don't need it. I want to be happy. I want to love myself. I want to be happy. That's my first. Then we will see. अब मैं खुशी के साथ करूंगी तो करूंगी, मेरे को खुशी नहीं मिल रही बाल बनाने में तो मैं नहीं बना रही. Fuck you. Just let me be happy. Don't fuck my peace of mind. So, that's where you start. Yes, any questions? Any questions? खुद से प्यार शुरू करोगे ना, धीरे धीरे चीजें फ्लो होने लग जाएगी. मतलब इजी हो जाएगा बाल बनाना भी, काजल लगाना भी. मतलब यू विल जस्ट लव डूइंग इट. अभी जोर आता है, धीरे धीरे जितना प्यार बढ़ता जाएगा उतना कम जोर आएगा तैयार होने में, अच्छे कपड़े पहनने में, डांस करने में. मैंने आई थिंक डांस भी मैंने वो BCI की मीटिंग में किया था, वो भी जबरदस्ती मैं पार्टी में गई थी. उसके बाद बिकॉज आई लव डांसिंग, इट ओपन समथिंग इन मी, राइट. और अभी मैं लास्ट 2-3 दिन से डांस कर रही हूँ, तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी. It's my mood shifter. So you will, once you start loving yourself, either do things that will make you happy about your own self, or start loving yourself and you will start doing things that you love. मतलब कहीं से भी पकड़ लो, आना उधर ही है. I think मेरे साथ जो होता है, that I can at least recall, is that it depends on my mood. Some days you're just confident for some reason. You just feel good with yourself. कोई नहीं उज्जवल, I'm telling you, ये कोई मूड नहीं है, ये साइंस है.
जिस दिन आपका मूड अच्छा होता है आपने वो चीजें की होती है जो आपको पसंद होती है, जिसमें आपको मजा आ रहा होता है। जिस दिन आपका मूड खराब होता है आपने वो चीजें की होती है जो आपको पसंद नहीं होती। सिंपल, इट्स साइंस। कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं है। जस्ट लर्न द साइंस, अंडरस्टैंड इट। So if you're doing something which is very difficult for you, understand, mix it with things that you love to do. जैसे मैं बहुत कंसंट्रेटेड टेक्निकल वर्क कर रही हूँ, मैं शीट्स चेक कर रही हूँ, एफएमएसएस चेक कर रही हूँ, चेकलिस्ट चेक कर रही हूँ, मुझे जोर आता है तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा चेक करती हूँ, बीच में म्यूजिक सुन लिया, डांस कर लिया, फिर चेक कर लिया, फिर डांस कर लिया, फिर चेक कर लिया, फिर डांस कर लिया। Are you understanding? It's a science. It's your duty to keep yourself up. That's it. बी वेरी कॉन्शियस, क्या चीज तुम्हें अच्छी लगती है, क्या चीज अच्छी नहीं लगती, किस चीज में तुम्हें जोर आता है, किस में नहीं आता, क्या चीज तुम्हारे लिए इजिली फ्लो करती है, क्या चीज में तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। एंड इफ थिंग्स, सम थिंग्स आर नीडेड टू बी डन, जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसको मिक्स करो उन चीजों के साथ, राइट। जैसे मेरे को अगर सुबह अगर मैं 4, 5, 6 बजे 7, 8 बजे तक नहा लूंगी तो नहा लूंगी, 9, 10 बजे के बाद मुझे जोर आता है नहाने में, मुझसे नहीं नहाया जाता। अब ये साइंस क्या है मुझे नहीं पता, नहीं होता नहीं होता, तो मैं कोशिश करो जल्दी नहा लो। भाई बेसिक है, जस्ट जस्ट लर्न थिंग्स अबाउट योर ओन सेल्फ। सो उज्जवल, इट्स एन इन्विटेशन, इट्स अ फर्स्ट स्टेप। आप अपने साथ रिलेशनशिप में अब जाओगे, अभी तक तो आपने खुद के साथ डिवोर्स ले रखा था। Are you understanding? This is the practice. बेबी स्टेप है जहां आप शुरू करोगे खुद से बात करना, खुद को जानना, खुद को पहचानना, खुद को प्यार करना। सबको लगता है मैं तो खुद से प्यार करता हूँ, नहीं बाबा, सब वहीं पे है। मैं अवेयर हूं कि मेरे को प्यार नहीं है खुद से ज्यादा, मुझे सीख रही हूँ। आपका ये अवेयर होना भी बाकी है कि आप खुद से कितना कम प्यार करते हो। जब आप मैजिक मिरर में जाओगे और खुद से बात करोगे ना, आपके अंदर की इतनी चीजें निकल के आएंगी, आपको लगे बाबा रे किससे बात कर ली मैंने। True. Perfect. Enjoy the journey. Yes, Ankit. Amazing session today. I Yes. was just feeling this the power of our sessions, the power of this book. मतलब क्या फ्लो है जबरदस्त, हिल गए आज। मतलब व्हाट अ फ्लो, ग्रेटिट्यूड की जर्नी को हाउ इज बीइंग डिपिक्टेड इन द बुक एंड वेयर इट इज टेकिंग यू। आई एम अमेज्ड टुडे। एंड मतलब दिस इज द फर्स्ट सेशन में मिरर के सामने ही बैठूं, कैफे में मेरे सामने मिरर ही है। Wow, Ankit. Wow, तो universe really loves you. सीरियसली मतलब एंड यू नो टुडे सेशन व्हाट गिव मी लाइक, कोई भी चीज नहीं होती है थोड़ी भी, सो आई गेट वेरी मच डिससेटिस्फाइड विद माई सेल्फ कि नहीं यार। Self-critical. ये सेल्फ क्रिटिकल नहीं यार, मतलब एक ये तो होना चाहिए था, ये पूरा करना चाहिए था, वॉट फॉर वॉट एवर रीजन मतलब। अंकित, मेरी तो ड्रीम्स भी बट इतनी बड़ी बड़ी है। मैं जब फर्स्ट सेकंड क्लास में थी ना, तो मैं खुद को महात्मा गांधी से कंपेयर करके रोती थी। जस्ट इमेजिन हाउ सेल्फ क्रिटिकल आई एम एज अ पर्सन। In first, second class, I used to compare myself with Mahatma Gandhi and Mother Teresa and I don't know what not people in life. And that's a damaging relationship with your own self. It's not a great, यस मैं फन वे में बोल रही हूँ, बट मतलब मेरे को सेल्फ क्रिटिकल होने के लिए मौका मिलना चाहिए। इतनी क्रिटिकल हो सकती हूँ मैं, सेल्फ क्रिटिकल। अपन इस तरह से खुद को स्टैब करते हैं कि वो लॉजिकल भी नहीं होता, सिर्फ आदत होती है खुद को सेल्फ सैबोटाज करने की। Yes, Juhi, anybody else? Varun, Prerna, any questions? Oh, just amazing. I remember I joined this class in week 19 maybe, और मैंने रिचा आपको बोला था ना कि यार I missed it, इतना लेट हो गया मैं and all that, and you said कि never say these words, and now I can proudly say I am grateful and thankful that I am on the conclusion path of the journey that you guys are having after good 26, 27 days, and I feel great about it. Crazy, nice, nice, nice. Yes. No apologies, no remorse, I nothing will of also that feel kind. कि I only am no, no. grateful. मैं भी बहुत सॉरी फिगर बनती हूँ,
अंकित ने आज मुझे करेक्ट कर दिया, मैं आज से सिर्फ सॉरी बोलूंगी, जबकि मुझे थैंक यू बोलूंगी, जबकि मुझे अवेयर था कि मेरे को सॉरी नहीं बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, पर क्या वो आदत नहीं जाती सॉरी बोलने की, इतना अच्छा, सॉरी। अंकित ने लिखा था राइट। हाँ अंकित, आप तुमने लिखा था ना भाई, मजा आ गया। गुरु को सही। करेक्ट करने में ना, जो गुरु को करेक्ट करने में मजा आता है ना, आ हा। काश काश हम राहुल सर को करेक्ट कर पाए कभी। सर आपने ये सही नहीं किया। आपको ऐसे करना चाहिए था, आपकी साइंस ऐसे है। नहीं वरुण भाई, मैंने नहीं लिखा था, बट स्टिल आई एम थैंकफुल टू यू गाइस कि तुम्हें याद है कि मैंने लिखा था। इट्स सो अमेजिंग, थैंक यू गाइस। अंकित आपने ही तो लिखा था। मैंने नो नो, लिखा था ऋचा, अमित तू अमित दे ने दे लिखा था, हाँ अमित गोयल ने लिखा था। अनिष्का ने लिखा था, अनिष्का ने। मैंने अमित 2 दिन गोयल, पहले अमित लिखा है, गोयल। टुडे अगेन यू सेड सॉरी। बट यार वो अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा काम इस पे। ऋचा ग्रेटिट्यूड सीखो Let it तुम। go, let it हाँ go. देखो आ गया हमारा You know, हमारा। you know, as a kid, I've so my self image is as a kid, I'm a disappointment to my parents. और वो मेरा इतना डीप रूटेड कि आई एम अ पर्सन हु इज डिसअपॉइंटेडमेंट टू माय पेरेंट्स। तो एज अ किड मैं फर्स्ट क्लास में थी, मैंने क्या वो कैट मैट सेट का पेपर था, उसमें चीटिंग की थी। तो मेरी एक टीचर ने मेरे पेरेंट्स को स्कूल बुलाया था कि इसने चीटिंग की है। शी बेस्ड देम लाइक एनीथिंग। और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला था आपको अगर आप इस पे ध्यान नहीं दे सकते और आपको लड़की नहीं चाहिए थी, बिकॉज माई मॉम वॉज प्रेग्नेंट, तो उनको कहा था आपको लड़की नहीं चाहिए थी, आप इस पे ध्यान नहीं दे सकते, तो आपने इसको पैदा ही क्यों किया एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई मेड अ स्टोरी दैट आई एम अ डिसअपॉइंटमेंट टू माई पेरेंट्स, and that feeling of disappointment is so subconscious that I'm always a sorry figure no matter how good things I do in life. So I will be more conscious and aware, and I will practice saying thank you. And वो टीचर ने जो भी कहा वो उसके कर्मा थे, मेरे नहीं थे. आई एम नॉट टेकिंग हर थिंग्स इनसाइड मी, and I was just perfect as a kid, and I'm still perfect as a human being. When did you realize, वेरी Richa, that नाइस। that awakening of what happened in class one? When did you और ये realize? सब लैंडमार्क की टेक्निक्स है यार, मैंने लैंडमार्क किया हुआ है 8 साल तक, मैंने विपस्सना किया हुआ है 10 साल तक, मैं स्पिरिचुअली बहुत आगे हूँ. Okay. मैंने खुद पे बहुत काम किया है. All right, I get Still, it now. बताओ सॉरी कह रही हूँ क्लास में, क्या मतलब है? So Don't be too hard on yourself. It's वो okay to be imperfect. यस। no, I am very happy. I'm very very happy. I'm amazing. I love myself. I love myself. मुझे सुबह 4 बजे उठ के मैं सबको बोल रही हूँ I love myself and I love Richa. नेक्स्ट लेवल जा रहा है मेरा. सच में आपके जो 4 बजे वाले जो मैसेजेस होते हैं वो तो क्रेजी होते हैं यार. मतलब इतनी एनर्जी कैसे आती है? हम ले क्या रिचा, क्या पागल हो गई, क्या हो गया यार? दिस इज क्रेजी. बट वेल डन है. मैंने ना उज्जवल रिचा को बोला था, मैंने कहा ऑलमोस्ट 6 months इनटू इट, प्रोबेबली 7 months हो गए हैं, और 7 months में इतने मैसेजेस नहीं आए हैं. लोग पागल हो गए क्या? सुबह 5:30 बजे एटलीस्ट 50 people हैव सेड थैंक यू, गुड मॉर्निंग. यार ये इतनी जल्दी कैसे लोग उठ रहे हैं? मतलब अमेजिंग. मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ बीइंग थैंकफुल is actually transpiring across people, That too, not which just I waking up believe early. My point which is I waking up believe is happy. powerful. Ujjwal, it's so powerful. Matlab, my wife is not now; she has just left the car, and I told everyone in class 19 कि I never knew about the word M of manifestation because मुझे पता ही नहीं था कुछ भी. But now that I know about it, things are just happening. और मुझे realize हो रहा है I always have been like overachiever. मतलब I never settle for anything less than perfect. And I was being too harsh on myself. अब मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि यार चीजें इजीली भी ना आई कैन अचीव. And Same with me. just because I believed you can only achieve success and miracles by working hard. There is no second option. तो ये शायद ना वो Belief वायरिंग हुई हुई system है थी. ये. Wiring है. वायरिंग हुई सेम हुई है. सेम वायरिंग वरुण भाई, मेरी भी सेम वायरिंग यही Wiring एग्जैक्टली। और मेरी भी है. एक आई विल ऑल्सो शेयर दिस वेरी फैक्ट. आई एम अ साइंस स्टूडेंट. तो अब मुझे रियलाइज होता है बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आई वाज ऑलवेज टॉट
since my childhood, और शायद हाँ, मैंने चूज भी इसीलिए किया, to be very logical. I will never speak anything illogical. और मुझे लगता है कि अभी ना मैनिफेस्टेशन में लॉजिक पहले नहीं लगता था मुझे कुछ लॉजिक है. I always thought कि science is the only thing and there is nothing else. तो मेरे को दी होल नॉलेज ऑफ लेट्स से अ कॉमर्स और एन आर्ट्स, अब मैं 3 सब्जेक्ट्स में करूंगा बिकॉज इंडिया में हमें ना 3 ही चीजें आती हैं. वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग एल्स, राइट? तो वी आर सेग्रीगेटिंग आवरसेल्व्स की बॉस तू लॉजिकल है, तू मैथमेटिकल है, एंड यू एंड द थर्ड वन बीइंग द आर्ट्स, जो कि कुछ भी creative, है, मतलब हाँ, एनीथिंग emotional, एल्स इज इनटू sensitive, आर्ट्स. crazy, I now realize artist. I'll share a very interesting anecdote. I was in US. I was studying my master's degree there, and I met the MD of Morgan Stanley. If anyone of you have heard about that name, he was a history major. Okay. That goes way back in 2007. I met him at a networking event, और वो PhD था. I was like, ये मॉर्गन स्टैनली को कुछ और नहीं आता क्या? हिस्ट्री मेजर आदमी, मतलब इसको क्या ही आता होगा? क्या ही आता होगा इसको? इसको कोई कैलकुलेशन नहीं आती होगी, इसके पास कोई लॉजिक नहीं होगा. और मतलब आई हैड दैट नोशन इन माय माइंड. आई नाउ रियलाइज व्हाई व्हाई पीपल थिंक लाइक दिस. मतलब मैंने ये क्यों सोचा, बिकॉज आई हैड दैट बिलीफ इन माय एजुकेशन सिस्टम, एंड rather all of us have that belief. Foreign education, I see now, it's not restricted to one course. Why they have a major and a minor? Correct. They learn about everything, and we don't learn about these things. They learn How to the manage right people. and left side of the brain, the left and right side of the brain, the balance of it. Exactly. Like मेरे को me, subconscious mind नहीं पता था. I had no idea about subconscious mind. मुझे तो पता था conscious mind ही होता है, सब कुछ होता है. And 9 months back, not 9 months back, April 5th, मेरे को किसी ने subconscious mind के बारे में बताया. And trust me, मेरे को ना अब conscious mind समझ ही नहीं आता है. Whatever magical I have done in my life in last 7 months has only happened because of subconscious mind. I don't know, मतलब it's like, जैसे सर ने बोला था ना, there are thousands of laws, and just because it is not discovered yet does not mean it is not valid. It is all very valid. It's just that we don't know about it. The moment we know about law of attraction and we have a proof of concept, let's say, honestly मुझे लगता है I have a proof of concept with, let's say, Richa. अगर कोई और बोल रहा होता तो मैं शायद ये क्लास को रिपीट नहीं करता, नहीं आता. Somehow I feel, I see, जैसे रिचा ने 4 AM डाला, I see the positive energies. तो I have a proof of concept that yes, it is actually working. अब वो नजर आने लगा है ना, we start believing in these laws and we start believing in manifestation and everything. मतलब it's true यार, it's true. यार एक True and बहुत true. बड़ी प्रॉब्लम हो गई. For some reason recording ही नहीं आती क्लास में. नजर आ रहा है रिकॉर्डिंग तो. नहीं, आई एम टेलिंग यू वाइट. नहीं, क्यों नहीं हुई रिचा? बिकॉज ये सेशन सिर्फ मेरे लिए था आज. क्योंकि आई एम टेलिंग यू, आई वाज सो लो ऑफ एनर्जी. मतलब मेरे को किसी की शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा था, खुद की तो बहुत दूर दूर तक नहीं. और आज वही शक्ल देख के वही मैं सामने देख रहा हूँ, मतलब अमेजिंग. मेरी एनर्जी बदल गई पूरी. आई वाज क्रिटिसाइजिंग द होल डे टू माई सेल्फ, टू एवरीवन इन दिस वर्ल्ड. इतना पावरफुल सेशन था यार, रिकॉर्ड नहीं हुआ. अमेजिंग अमेजिंग, मतलब मजा आ गया आज. और वरुण भाई एक बात है, वरुण भाई, हु इज द बेस्ट टीचर, हु कैन बी अ बेस्ट टीचर, हु रिमेन्स अ स्टूडेंट फॉर द लाइफ लॉन्ग. तो वही बेस्ट टीचर बन सकता है. ट्रस्ट मी, यस, बिकॉज जब हमने पढ़ाई, जब मैं अपनी बात करता हूँ, आई कांट स्पीक ऑफ एवरीवन एल्स. I stopped learning in 2009. 10, 11 में it was like you are in a playing field now. You have to learn by yourself. But the moment I stepped into the class one day workshop of Rahul Jain, मुझे realize हुआ यार, there is a lot to learn yet. And I will not stop learning. I will not stop learning. And this will help us all grow. The moment we stop learning, we will stop growing. We will not grow to the extent we want to grow. Yes, now perfect. अब अपनी नेक्स्ट बुक शुरू हो रही है 1 सितंबर से. और आप लोग ने बोला था वो एडवाइस ट्रैप के लिए, तो
हल्ला गुल्ला करके क्लास में एटलीस्ट 50 जने तो नेक्स्ट क्लास में. I won. Yes, yes, Great. एकदम. ठीक. Okay. See you Thank you, tomorrow. everyone. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye-bye. Thank Bye. you.